So we are live. Okay. हेलो एवरीवन, हाय SoarX मैम, कैसे हो सब? तो आई फील आप सब लोग अच्छे हो गए, गुड. सो टुडे वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू session, with our new series of session, and we are having with us today Mr. Gautam Malhotra. He's an SDE2 at Lenskart and have working with Kafka and Java for several times. So he'll going to tell you the insights about these things. So let's hand over the virtual stage to Gautam. Now, Gautam sir, it's all yours. Yes. Hello everyone. Uh, I guess Raghav has introduced me. Like I'm currently working as an SG2 at Lenskart, and from my tech background, over 3 years I've been working in Java and Kafka, Spring Boot, and these kind of backend technologies only. And today we'll be covering how multi-threading works in Java and how Kafka plays an important role in big product-based companies. Like LinkedIn has created Kafka, and now every big company like Netflix, you say Microsoft, Google, every big company uses Kafka as a messaging tool, and we'll know how it goes around. Okay, you can see my screen. I'll start with multi-threading and synchronization in Java. So basically, multi-threading is a process of executing multiple threads simultaneously, allowing concurrent execution within a program. Like there is a written a program. If we talk about a function, like there is written a function, and in this function we can divide the processes of that function in different parts. Like there is a function that is doing two tasks. First one is like writing in a particular database, database 1, and writing in a particular database, database 2. So पहले क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है तो डेटाबेस 1 पे पहले एंट्रीज जाएगी एंड डेटाबेस 2 में एंट्रीज जाएगी. बट विद मल्टी थ्रेडिंग वी कैन डू इज डेटाबेस 1 पे एंट्रीज तो जा रही है, एंड जो दूसरा हमारे पास अगर सीपीयू लेफ्ट है, अगर सीपीयू में स्पेस हमारे पास लेफ्ट है तो वो पैरेलली दूसरे थ्रेड से प्रोसेस डेटाबेस 2 में यूज हो जाती है. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ थ्रेडिंग. सो utilizes सीपीयू कोर्स मोर एफिशिएंटली. जो भी हमारे पास प्रोसेस होती है वो सीपीयू कोर्स में होती है. अब अगर हम एक नॉर्मल एक फंक्शन को देखें, एक फंक्शन जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर एक प्रोसेस असाइन हो जाती है सीपीयू में, एंड वो भी एक डिफरेंट थ्रेड पे चलती है. बट जावा में हम क्या कर सकते हैं मल्टी थ्रेडेड में, कि हम एक फंक्शन के अंदर इंटरनल पार्ट्स को ही डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में मूव करने के लिए. अब हम उसमें की टर्म्स देख लेते हैं. हम मल्टी थ्रेडिंग में की टर्म्स होती है लाइक थ्रेड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसेस that share resources within a process. A process is basically a method that we are calling in our program, and thread is its smallest unit. If we talk about key in coding, like how we execute it, so basically हम एक थ्रेड फंक्शन होता है, एंड इस यहाँ पे हम ये बेसिकली रन होता है, एंड एक फंक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं माई थ्रेड से, एंड यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हम लिखेंगे. अब जैसे यहाँ पर तो अभी हमने नॉर्मल लिखा होगा कि दैट थ्रेड इज रनिंग, बट लेट्स से हमें कोई डेटाबेस में एंट्रीज करनी है, तो वो हम यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बना के देन डेटाबेस एंट्रीज हो जाएगी, एंड वो बेसिकली अगर हम इस थ्रेड के थ्रू कर रहे हैं, एंड तो वो पैरेलली होएगी बेसिकली. अगर नॉर्मली हम
एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक के बाद एक होएगा, बट थ्रेड के साथ करेंगे हम तो इट विल एग्जीक्यूट पैरेलली ओनली. And for using multi-threading, Java has given us two methods. The first one is thread class, and the second one is runnable interface. So basically, they both are the same. Just runnable has multiple inheritance in this. Gautam, yeah, sorry to interrupt you, buddy, but audience is saying not clear. Can you zoom the document a little bit? Yes. Yeah, because audience is saying that it's not clearly visible to them. Okay. Now is it fine? Yeah, that's good. Okay. Yeah, I think now it is fine. Okay. So basically, we'll talk about life cycle of Java. First, that live thread is created. First, the thread is created. That here we define the thread, right? In the function itself, we define the thread. Then thread is created. Now, when we execute that thread by calling the method, then a CPU scheduling is being done in the CPU itself. Like what thread will be assigned to that particular function. And there is also blocking and waiting in the CPU itself. That is the job of CPU only, where thread is waiting for an event or release of a resource so that it can use. For example, if in a thread, in a you just imagine thread as a as a individual function, and let's say that thread is executing some entries in database, and let's say uh, that database and that specific row is being used by any other function. So it will create what do we say, um, uh, uh, redundancy in the database, right? Like for a particular row we are changing a particular column, but two functions are using it. So that is also a problem with a thread. We'll get to that after reading about thread only. And after that, thread have running state, and in the last it's terminated when the thread is completed, when the function is completed. And the second part will be using here is synchronization. So basically, this is a problem in basically multi-threading. Race conditions occur when two threads access shared data simultaneously, causing inconsistent result. Basically, when in a let's say in a particular database, in a particular column, there need to be an entry. Let's say that database name is uh, cash cash deposits, and that table is a like withdrawal table for a bank system, in which amount is to be written. Like we are depositing an amount in the ATM. So like if we are depositing 1,000 rupees, then in our database, in my name, like in Gautam's account, 1,000 rupees will be entered because I have deposited that. So if from multiple locations I am depositing that, if let's say depositing can be occur by like Google Pay also. Google Pay from let's say in a particular time, someone is sending me Google Pay, and someone another person is sending me through bank transfer only. So if in a particular time, let's say 11 a.m. and 11 a.m, like
there can be instances. I am just giving an example. It's a very small example, but this is a very big conditions in some problems. So when two sources are using a particular database, then there can be redundancy in the data. Like if first person is giving Google Pay as 1,000 rupees and the second person is doing bank transfer of 10,000 rupees, so in that particular time, that particular column will be updated na. So that will create redundancy in the database and it will be inconsistent. So this problem need to be solved, and that is solved by synchronization, by applying synchronization on the particular function which is used to deposit money in the database. So here that synchronization ensures that one thread can access a resource at a time. So when two particular basically methods are calling that deposit function na, let's say from Google Pay and that bank transfer, so synchronization will ensure that only one at particular time, one only access the database and another will be waiting for a small amount of time, and then after that it will be creating entries. So it's a very small example like how synchronization is uh, like if there is a function and we need to add a synchronized keyword here beside that function, which will increase the count, and this is the synchronized block. Like now this particular value will be synchronized if this function is being called by like two methods. If this function is being called by two methods, then the synchronized method will define that two methods will be calling it simultaneously, and it will not result in inconsistency in the data. Here you can imagine that it is just saying count plus plus, we are just increasing the count of a variable. But here we you can just imagine the example that I have given, that here we are creating database entries into the deposit table, right? So there are basically two types of synchronization. One is process synchronization, and another is thread synchronization. First, in the process synchronization, it is used when processes are share resources. Like it's the basic one. Processes are share resources. Like resources are the database. Basically, the database that particular process are sharing the particular resources the database only. And thread synchronizations are basically used with threads. It so process synchronization is used with the methods, normal functions, and the thread synchronization is used with threads when we are defining threads on a particular function. Now we will see like how internally it happens in the communication. We'll see. So there is a synchronized block, and it will ensure that it waits for other process to be completed, and it will notify the other process that yes, I have completed. Now you can execute your process. Common synchronization problems that occur are like deadlocks,
occurs when two or more threads wait indefinitely for each other to release resources. And like first we see na that in synchronization, for one thread will be waiting for other thread to be completed. And let's say if that particular thread is not releasing the lock, that it is no वो डेटाबेस में लाइक एंट्री कर ही नहीं पा रहा, तो वो बेसिकली रीट्राई करता रह जाएगा। एंड जो सेकंड वाली थ्रेड है वो उसका वेट ही करती रह जाएगी, तो ये एक डेडलॉक कंडीशन क्रिएट कर देता है। बट उसके लिए हम एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम टाइम आउट बेस्ड लॉक्स लगा सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर थ्रेड अगर डेटाबेस में एंट्रीज नहीं कर पा रहा, अगर वो रीट्राई करे जा रहा है लेट्स से 1 मिनट तक, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं कि 1 मिनट के बाद वो थ्रेड रिलीज हो जाएगा एंड उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर सेकंड थ्रेड जो है, जो सेकंड फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट होएगा ताकि प्रोग्राम हमारा चलता रहे एंड वो एरर ना क्रिएट करे। एंड बेसिकली here also the main example that we have given here is like विड्रॉ फंक्शन है एक बेसिकली, उसमें हमने अमाउंट डाली, तो ये सिंक्रोनाइज है। अगर हमने विड्रॉ भी हमने अगर दो जगह से कर लिया कि गूगल पे से भी अगर हम पे कर रहे हैं एंड एटीएम से भी, या फिर फोन पे से भी कोई हमारा एक्सेस कर रहा है, तो इट्स अ वेरी लाइक स्मॉल एग्जांपल कि एक ही टाइम पे एक फंक्शन से दो चीजें हो रही है, तो यहाँ पर दो अमाउंट आ जाएगी, दो अमाउंट आएगी एंड बैलेंस को हमने चेक करना है अगर, तो ये रिडंडेंसी क्रिएट करता है। इसलिए बेसिकली सिंक्रोनाइज यूज करते हैं कि एक टाइम पे एक ही फंक्शन को वो यूज करेगा एंड वो इंटरनली हैंडल कर लेता है बेसिकली जावा में। एंड सो प्रैक्टिसेस बेसिकली यही है कि मल्टी थ्रेडिंग enhances performance and responses but requires careful synchronization to avoid conflicts। लाइक वीसीना की डेडलॉक की कंडीशंस बन जाती है एंड लॉक अगर रिलीज नहीं होता, तो वो हमें हैंडलिंग करनी पड़ती है, उसमें वो मैनुअली करनी पड़ती है हमें हैंडलिंग की लॉक रिलीज हो जाए एंड सेकंड थ्रेड भी एग्जीक्यूट हो पाए। एंड यूज वी शुड यूज थ्रेड बेस्ड, जब हम डेटाबेसिस का यूज कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे होते हैं, तो कंकरेंट हैश मैप्स आर द मेन लाइक go to go to data structures that we should use concurrent hash maps, because उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन इनबिल्ड होता है, हमें खुद से नहीं करना पड़ता, सिंक्रोनाइजेशन इनबिल्ड होता है एंड थ्रेड सेफ्टी इंश्योर भी करते हैं concurrent hash maps। if you have any questions। Okay, so now we will start with how Kafka works and its overview and architecture. So first I will show you a diagram here. What is the like what is a Kafka? Kafka is basically a cluster component. It's basically it's not a language, it's a tool. Kafka is a tool that is used to it is used as a messaging tool, uh, and it works on a principle, topic based principle, where producer produces data and it and consumers consumes data. Producers are nothing but just functions. Producers are just functions that are producing data, and that data is being used is to be used by consumers, and that consumers are different services. So
this Kafka basically is used to communicate between different services in a particular organization only. You might have listened about microservices architecture. So, what is microservice architecture? It is an architecture in which a particular service, like a big service, like if we talk about the website of Lenskart, if we do just one work, we are creating a program. If we are creating a program, then we will write the particular program in a particular service only. And the other thing that we can do is we divide the program in small units so that it is easily manageable. So that particular services, like let's say we have five services, that five services need to communicate with each other, right? That five services, like some operations is being done by in the service one, and if that if that communication is completed, then that data is to be consumed by, let's say, service number 5. So for that purpose, Kafka is being used, and the core concepts of Kafka is producer. There is a term producer. There is a term consumer, broker, topic, partition, and zookeeper. So what is a producer? Producer is nothing but a function. It's a function in a particular service that is used to send messages. Messages are nothing just data, the data that we are sending. Let's say we need to send details of a customer from a service 1 to service 2. And that customer details have, let's say, customer name, address, mobile number, and what kind of order he has placed. That data is to be sent to um, service number 2. So for that purpose, we will create a topic. let's say the topic let's say the topic name is employee data. So in that employee data, we will be sending the data. And consumers, what consumers can do is, consumer is also a particular function that listens the data from particular topic, right? So basically you can relate it with radio fms. What are radio fms? On a particular frequency, we have a particular frequency like 99.5 hm, like we have frequencies, right, in the radios. In that particular frequencies, that radio jockeys are producing the data, and they are sending the data to that particular frequency. And for that frequency, everyone is consuming the data. Fm radio is being when we are driving cars, we have fm radios, right? And that every radio device is consuming the data. So here also is the same concept. That topic is the frequency. The frequency is just a number. Topic is also just a number, or we can say just a name, a string, a unique string. A unique string, we name the topic. And here, let's say we are using an employee data as a topic. Producer are producing data into that topic, and the consumers, if that consumers have that particular need of that data, they can consume it easily. So here another concept is broker. So brokers are basically that manages the data between producer and consumer. प्रोड्यूसर से डेटा प्रोड्यूस हुआ, एंड वो एक क्लास काफका क्लस्टर में चला गया. काफका क्लस्टर होता है बेसिकली एक काइंड ऑफ स्टोरेज सिस्टम काफका का इंटरनली, जिसमें वो मैसेजेस को स्टोर करता है.
एंड जिस कंज्यूमर को मैसेज चाहिए वो कंज्यूमर काफका क्लस्टर से मैसेजेस पुल कर लेते हैं। पुल कैसे करते हैं? बेसिकली वो टॉपिक का नाम बता के कि ये टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक के नाम पे जो भी डेटा आएगा वो हमें अपने फंक्शन में चाहिए, तो वो हमें कंज्यूमर्स में मिल जाता है। एंड काफका क्लस्टर्स में हमारे पास पार्टीशंस भी होते हैं। पार्टीशंस में क्या होता है, हम पैरेललिज्म एनेबल्ड होता है। बेसिकली अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है एंड वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट पार्टीशंस का यूज कर सकते हैं। एंड पार्टीशंस पे अभी हम इतना डीप नहीं जाते, बस नॉर्मली अगर हम यही देखें कि मेन कंसेप्ट यही है, हमारे पास प्रोड्यूसर से डेटा प्रोड्यूस होता है, काफका क्लस्टर पे डेटा मैनेज होता है कि वो डेटा फॉल्ट टॉलरेंट रहे, एंड वो काफका इंटरनली करता है। एंड उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, लाइक कि वो जो डेटा हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो कितने डेज तक रहेगा। डिफ़ॉल्ट हमारे पास 7 डेज तक रहता है डेटा जो प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस हुआ है, एंड कंज्यूमर्स 7 डेज तक कंज्यूम कर सकते हैं। बट वी कैन इंक्रीज इट्स कॉन्फ़िगरेशंस कि कितने दिन तक हमें डेटा चाहिए। लेट्स से 7 नहीं, हमें 15 डेज तक चाहिए, तो वी कैन सेट दैट। एंड हम उसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, कि अगर इससे ज़्यादा डेटा आ रहा है तो हम अ, नहीं, तो इससे ज़्यादा डेटा आ रहा है तो एक टाइम पे नहीं आना चाहिए। तो इस काइंड ऑफ these kind of configurations we can set in this Kafka tool. Topics and partitions. So हमने यही देखा है कि टॉपिक्स होते हैं एंड पार्टीशंस होते हैं। टॉपिक्स पे डेटा प्रोड्यूस होता है एंड पार्टीशंस में डेटा स्टोर होता है। एंड पार्टीशंस बेसिकली क्या होता है कि रेप्लिकास बना लेता है हमारे पास डेटा के। हमारे पास जो डेटा आता है हम उसके रेप्लिकास बना लेते हैं। अगर क्योंकि अब हमारे पास अगर एक डेटा लॉस हो गया, लेट्स से एक पर्टिकुलर डेटा है, उसके हम 2 रेप्लिकास वो हम डिफाइन कर सकते हैं काफका क्लस्टर में कि कितने रेप्लिकास बनाने हैं हमें। वो फॉल्ट टॉलरेंस पे है। अगर हम 2 रेप्लिकास बनाते हैं एंड मान लो कि एक रेप्लिका फेल हो जाता है कहीं, तो दूसरा रेप्लिका हमारे पास रहेगा। तो वो टास्क होता है पार्टीशंस का। वो बेसिकली इंटरनल करता है उससे। हमारे अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं है, ये इट्स जस्ट अ कंसेप्ट कि पार्टीशंस इंटरनली वो कैसे वर्क करते हैं उसमें। एंड प्रोड्यूसर्स में हम सेंड करते हैं डेटा, एक हम की भी सेंड करते हैं। कीज इंश्योर करती है कि अगर हमारे पास, अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेटा भेज रहे हैं एंड अगर लेट्स से दो तीन डेटा है, हम उनके लिए अगर की सेम भेज रहे हैं तो वो सेम पार्टीशन पे जाएगी एंड वो सेम ही ऑर्डर में कंज्यूम होएगी। बट अगर हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो टॉपिक पे जा रही है और उसकी कीज डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब 3 डेटा है हमारे पास, 3 डेटा की 3 ही डिफरेंट कीज है। की बेसिकली कुछ नहीं होती, एक यूनिक की हो जाती है। यूनिक की बेसिकली एक यूनिक नंबर। हम लाइक ई कॉमर्स में ज़्यादातर कीज होती हैं शिपमेंट आईडीज। एक शिपमेंट, एक पर्टिकुलर शिपमेंट है, एक ऑर्डर है, तो उसकी जो की होती है, की शिपमेंट आईडी को हम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज वो यूनिक है। एंड अगर हम शिपमेंट आईडी हमारे पास, अगर की हमारे पास 2 डेटा है, अगर उन दोनों डेटा की हमारे पास सेम है तो वो एक ही पार्टीशन पे जाएगा। एंड वो एक ही पार्टीशन पे जाएगा तो वो कंज्यूम उसी ऑर्डर में होएगा। बट अगर डिफरेंट डेटा है एंड डिफरेंट भी कीज भी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट पार्टीशंस पे जा सकता है एंड वो कंज्यूम डिफरेंटली ऑर्डर्स में हो सकता है। वो डिफरेंट ऑर्डर्स में कंज्यूम होएगा डेटा, उसमें ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। फिर हम बेसिकली हम प्रोड्यूसर्स में एक्नॉलेजमेंट्स भी सेट कर सकते हैं दैट ब्रोकर, हमने प्रोड्यूस किया डेटा एंड ब्रोकर से हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ, हम डेटा जो है प्रोड्यूस हो चुका है। वो बेसिकली एक सेंड बैक आ जाता है। बट अगर
हम ये सेट करवा सकते हैं कि हम सिर्फ डेटा प्रोड्यूस करें, बट हमें कोई सेटबैक नहीं चाहिए। क्लस्टर पे डेटा गया है नहीं गया, वो ये बेसिकली असिंक प्रोसेस हो जाती है कि हमने प्रोड्यूस क्लस्टर पे डेटा भेज दिया प्रोड्यूसर से, बट हमें पता नहीं है कि वो डेटा गया है नहीं गया। उसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट 0 सेट करते हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट 1 हम सेट करते हैं जब हमने प्रोड्यूस किया डेटा, एंड वहां से कंफर्मेशन आता है कि यस, हम जो डेटा है वो प्रोड्यूस हो गया है, एंड दैट डेटा इज प्रोड्यूस राइटली, लाइक सही डेटा, सही से डेटा प्रोड्यूस हुआ है। तो उसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट 1 सेट करते हैं, और हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है हमारे फंक्शन को कि डेटा जो है प्रोड्यूस हो चुका है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स एंड लाइक कंज्यूमर ग्रुप्स की। कंज्यूमर्स बेसिकली रीड करते हैं डेटा टॉपिक से, एंड मल्टीपल कंज्यूमर्स ग्रुप कर सकते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ पार्टीशन से। अगर हम लाइक एक ही एक ही हमारे पास कंज्यूमर, एक ही कंज्यूमर है एक ही कंज्यूमर है एंड उसके हम कंज्यूमर ग्रुप सेट कर सकते हैं। एक कंज्यूमर के अंदर अंडर 4 कंज्यूमर ग्रुप्स है, वो चारों क्या करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, वो एक थ्रेड की तरह यूज करेंगे, वो एक थ्रेड की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे, एंड सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैसेज रिटेंशन क्या होता है। सो बेसिकली मैसेज रिटेंशन में यही होता है कि जो हमने डेटा प्रोड्यूस किया है वो कितने टाइम के लिए रहेगा क्लाफका क्लस्टर में, एंड वो कितने टाइम के लिए रीयूज भी हो सकता है डेटा। एंड एंड सो अनदर क्वेश्चन कम्स इज व्हाई काफका। काफका से पहले हम इंडस्ट्रीज में रैबिट एमक्यू यूज करते थे, बट रैबिट एमक्यू में एक तो बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा लिखना होता है, बट काफका में हमारे पास कोडिंग स्टफ कम होता है, एंड काफका हमें हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करवाता है काफका क्लस्टर्स में, बिकॉज वहाँ पर हम रेप्लिकास हमारे पास डेटा के बन जाते हैं, रेप्लिकास बन जाते हैं। अगर हम जो भी हमने टॉपिक पे डेटा भेजा है तो वो डेटा की हम रेप्लिका बना सकते हैं। अगर एक डेटा है, उस डेटा के क्लस्टर पे 2 डेटा स्टोर हो जाएंगे रेप्लिका की फॉर्म में, ताकि अगर एक डेटा अगर हमारे पास काफका क्लस्टर में या फिर कुछ हमारे सर्वर में प्रॉब्लम आ गई एंड एक डेटा हमारे पास लॉस हो गया, तो दूसरे उसके रेप्लिका क्लस्टर का डेटा हमारे पास रहेगा, एंड वो हम कंज्यूमर्स पे कंज्यूम करवा सकते हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंस काफका पे हम प्रोवाइड करवाता है, जो कि रैबिट एमक्यू भी है, एक मैसेजिंग क्यू है, वो भी इसी टाइप में वर्क करता है, बट वो रेप्लिका बेस्ड कुछ एंड फॉल्ट टॉलरेंस नहीं था उसमें। इसलिए काफका का आजकल बस ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में, ज़्यादातर बिग कंपनीज में, जोमेटो, ब्लिंकिट, लाइक एवरी कंपनी इज यूजिंग काफका ओनली, they are shifting to Kafka. And basically ये कि I have explained that it's scalable, it's fault tolerant, it's it gives high throughput, and it's the main use case is real time processing. It provides a very good real time processing. That is the main use case of product based companies. Okay, so this is this is the only thing that I have about. Let's just if you have any questions, you can ask. Guys, if you are having any questions, so you can ask in the comments.
I think it's the Sunday morning and everyone is like relaxing. Yeah. So okay, we can wrap up the session if there is no questions, no issues. Okay. Okay. Thank you, Raghav. Yeah, thank Yeah. you for being with us today, sharing your insights about Java and Kafka. I Yeah. hope audience के लिए it is a very learning opportunity. So thank you, Gautam, and for SoarX fam, stay tuned with us और भी ऐसे session series. We are up to the things. So follow for more and bye bye. Take care and have a good Sunday. Okay.